हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट नंबर 103 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। ओके, एनटीए अभ्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल है, उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम बायो से, देन आएंगे केमिस्ट्री, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। अगर इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप जो है वीडियो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसके बाद फिर वीडियो वीएलसी मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन में एचडी क्वालिटी में चलेगा। उसका भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ बायो का है। हाउ मेनी फ्रॉम द गिवन बिलो इज आर द करेक्ट मैच? फर्स्ट, अस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, सेकंड यहाँ पे करा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। थर्ड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, दिस एंजाइम कंसंट्रेशन इज हाई इन ब्लड प्लाज्मा। फोर यहाँ पे है नीमोटैक्सिस सेंटर, इट कंट्रोल्स रिस्पिरेशन एंड इज प्रेजेंट इन मेडुला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ का डी होगा। ओनली वन यहाँ पे जो है करेक्ट मैच है। अस्थमा इज द रिजल्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवेज which subsequently results in increased contractibility of the surrounding smooth muscles, leading to narrowing of the airway and the classic symptoms of wheezing. When carbon monoxide binds to hemoglobin, the resultant compound is called carboxyhemoglobin. The concentration of carbonic anhydrase enzyme remains high inside RBC than blood plasma. The pneumotaxic center is situated in the upper part of the pons towards the dorsal side. It is connected to all the neurons of the dorsal respiratory group and only the inspiratory neurons of the ventral respiratory group. Question number 2. Which of the following scientists conducted an experiment to explain the chemical evolution of life? Answer will be C. S.L. Miller. The experimental proof of the chemical evolution of life was given by Stanley L. Miller in 1953 by design an experiment that fulfied all the conditions that were similar to primitive earth conditions. क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ मैथ्स का कॉलम है। तो फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, आंसर का इसका सेकंड होगा यानी 2000 मिलियंस ईयर्स एगो। बी का थर्ड यानी इनवर्टिब्रेट्स आर फॉर्म्ड का 500 मिलियन ईयर्स एगो। सी का फोर यानी फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का होगा 3000 मिलियन ईयर्स एगो। और डी का फर्स्ट यानी जॉलेस स्पीशीज वेर इवॉल्व का फर्स्ट यानी 350 मिलियन ईयर्स एगो। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी ये रिपीट कर चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इवोल्यूशन ए टू डी। फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है व्हेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमंस ऑल मैमल्स शेयर सिमिलरिटीज इन पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्ब। बी यहाँ पे है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ हैज बीन changing over millions of years. About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. A single step large mutation is called speciation and explained by Herbert Spencer. How many statements are ever correct? तो यहाँ पे only 3 statements यहाँ पे correct हैं। ओके, और एक स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। Evolution for Darwin was gradual while Hugo de Vries believed mutation caused speciation and hence called its called it saltation. Herbert Spencer coined the phrase survival of fittest, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है गलत है, बाकी ए बी सी यहाँ पे करेक्ट हैं। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे है। सेलेक्ट द ऑप्शन विथ अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइलम ऑफ एनिमल्स टू द बिलो मेंशन्ड फीचर। फर्स्ट यहाँ पे है द बॉडी सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन made up of spicule or spongine fibers with conocyte line the spongocoel. Second यहाँ पे है specialized cell called flame cells help in osmoregulation and excretion. Third यहाँ पे है the body bears 8 rows of ciliated comb plates with which help in locomotion. और last 4 यहाँ पे the alimentary canal is complete with the well developed muscular pharynx. तो फर्स्ट यहाँ पे जो है कोनोसाइट्स जो होता है वो स्पॉन्जेज में होता है। सेकंड यहाँ पे है स्पेशलाइज्ड सेल्फ
कॉल्ड फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल जो है वो प्लेटी हेलमिंथेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और थर्ड यहाँ पे कॉम्प्लेट जो है वो टीनोफोरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंक्स जो है वो हमारा एसके हेलमिंथेस का कैरेक्टर है। In Porifera sponges, the body is supported by a skeleton made up of spicules or spongine fibers with conocytes line the spongocoel. In Platyhelminthes, the specialized cells called flame cells can help in osmoregulation and excretion. Ctenophora bears 8 rows of ciliated complets which help in locomotion. In Aschelminthes, the alimentary canal is complete with the well-developed muscular pharynx. How many animals from the following are warm-blooded with four-chambered heart and oviparous condition? आंसर यहाँ पे सी होगा 4। apes और birds are warm-blooded animals with four-chambered heart and oviparous condition. Okay, these includes corvus, crow, struthio, ostrich, sitaculla, parrot. Crocodile is reptile with a four-chambered heart. Which of the following can be obtained from amniotic fluid of the amniotic cavity that surround the developing fetus? Answer will be D. All of the above, yani cells of the fetus, skin, mesenchymal, pluripotent cells or hematopoietic stem cells. Amniotic fluid contains cells from the skin of the fetus and other sources. It can be a rich source of multipotent mesenchymal, hematopoietic, neural, epithelial, and endothelial stem cells. Which of the following is true regarding contraceptive type and its examples? Answer will be B. Oral contraceptive pill, Saheli Malady, and Trivilar. Which of the following is correct match? Answer will be B. Livestock includes cattle, buffaloes, sheep, pigs, goats, etc. Hisardale is a new breed of sheep developed in Punjab by crossing Bikaneri ewe and Merino ram. Mule is developed due to interspecific hybridization in which the male donkey is mated with female horse. All the following, all of the following structure are paired in male reproductive system except. Answer will be B. Prostate gland and urethra. In males, seminal vesicles and bulbourethral or corpus glands are paired accessory glands. The prostate gland is a single unpaired chestnut-shaped gland. Epididymis and vas deferens are paired male accessory genital ducts. Read the following statements regarding menstrual cycles in female. A यहाँ पे it is reproductive cycle in all mammalian females, तो ये हमारा गलत होगा. B यहाँ पे कह रहा है the menstrual flow results due to breakdown of myometrial lining of uterus, तो ये भी हमारा गलत है. ओके, यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है. ओके, सी यहाँ पे कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल एंड इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस जनरेट साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा. डी यहाँ पे है द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, तो ये हमारा गलत हो जाएगा. आंसर हमारा डी होगा. ओनली सी इज करेक्ट ऑप्शन. The menstrual cycle is the reproductive cycle in all mammalian primate females. The corpus luteum secretes large amounts of progesterone, which is essential for the maintenance of endometrium. The menstrual flow results due to the breakdown of the endometrium lining of the uterus. यहाँ fill in the blanks of the field read कर लेंगे. The embedding of blastocyst in the endometrium of uterus is called implantation. Okay. The embedding of blastocyst in the endometrium of uterus is the presence of progesterone. It occurs after 7th day of fertilization. Blastocyst is a 64 cell stage with a blastocele cavity. यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स तो फिल रीड कर लेंगे. द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूसियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम. ओके, रीड द फॉलोइंग मैचेज एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एंटीबॉडी कंटेन्स द वेरिएबल रीजन ऑफ
हेवी चेन ओनली, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे कह रहा है ह्यूमरल इम्यूनिटी ड्यू टू एंटीबॉडी सेक्रेटेड बाय प्लाज्मा सेल्स। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड यहाँ पे कह रहा है ग्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। फोर यहाँ पे है कोलेस्ट्रम प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट्स और न्यूबॉर्न्स, तो ये भी हमारा गलत होगा, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन एंटीबॉडी कंटेन्स अ वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी चेन एंड लाइट चेन एट द एमिनो terminal. Humoral immunity due to antibodies secreted by plasma cells. Graft reaction due to cell-mediated immune response. Colostrum gives passive immunity to the newborn child. Which of the following is not correct about the alkaloid obtained from the papaver somniferum plant? आंसर यहाँ पे डी जो है वो इनकरेक्ट होगा, यानी इट इज सीएनएस स्टिमुलेट विच आल्सो काउजेज hallucinations, और ए बी सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होंगे। दीज आर ओपॉइड ड्रग्स बाइंड्स टू स्पेसिफिक ओपॉइड रिसेप्टर्स present in our brain and gastrointestinal tract. Heroin is chemically diacetylmorphine and is commonly called smack. It is taken by snorting and injection. Choose the odd one with respect to ex situ conservation strategies. तो यहाँ पे हॉट स्पॉट जो है वो हमारा इन सिटू होंगे, बाकी ए बी सी जो है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन है। जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्ड और बोटेनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बी है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, बाकी ए सी और डी है जो बिल्कुल करेक्ट है। द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर इज कॉल्ड एक्सचेंज पार्ट ऑफ लंग्स। A healthy man inspire or expire approximately 6,000 to 8,000 ml of air per minute. About 97% oxygen is transported by RBC in blood. Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm and external intercostal muscles. Due to this, the diaphragm flattened to increase volume of thoracic chamber anterior posterior and ribs pulled outward to increase thoracic volume dorsoventrally. More conservative and scientifically sound estimate made by Robert May places the global species diversity at about, answer will be B, 7 million. A more conservative and scientifically sound estimates by Robert May places the global species diversity at about 7 million. More than 70% of the species recorded are animals, while plants comprise no more than 22% of the total. Among animals, insects are more species rich taxonomic group, making about 70% of the total. यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करके रीड कर लेंगे। इंडिया कवर्स द वर्ल्ड एरिया ऑफ 2.5% एंड कंट्रीब्यूट्स द ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ 8.1%। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर रीड कर लेंगे। ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर लैंड एंड वाटर रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम। which of the structure is not associated with the mucosa layer of the small intestine? Answer will be C, chief cells. The mucosa is the outermost layer of the small intestine. Its epithelium is called mucosal epithelium and is modified to form a finger-like projection called villi and microvilli. Intestinal glands are also called crypts of Leverkusen. Chief cells are present in the stomach secretes pepsin, a proteolytic enzyme. If 10,000 joule of energy is present at the T1 level, then what is the energy available at the T2 level? Answer will be C, 1000 joule. According to the 10% law, only 10% of the energy is transferred to its trophic level from its lower trophic level. If 10,000 joule of energy is available to the producer, then only 1000 joule of energy will be applicable to the primary consumer and only 100 joule of energy will be available to T2 organisms. In front of the lens, the aperture surrounded by the iris is called the pupil. Okay.
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फिल रीड कर लेंगे। द ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। Which of the following hormone helps in water retaining in the body and prevent water loss by making hypertonic urine? Answer will be D, both C and D. ओके, सॉरी, यहाँ पे बी और सी होना चाहिए, ADH या वैसोप्रेसिन। आंसर होना चाहिए डी, बोथ बी एंड सी। ओके, the antidiuretic hormone ADH or vasopressin or pitressin is released from hypothalamic nuclei in the case of water scarcity or excess loss of fluid from the body. ADH hormone prevent water loss by stimulating water reabsorption by renal tubule. The genetically inactive and highly condensed region with tightly packed DNA with which receives dark stain is. Answer will be B, heterochromatin. Heterochromatin is tightly packed form of DNA or condensed DNA which comes in multiple varieties. These varieties lie on a continuum between the two extremes of consecutive heterochromatin and facultative heterochromatin. If the total amount of adenine and thymine is double in the double-stranded DNA is 60%, the amount of guanine in the DNA will be, आंसर will be 20%। यहाँ पे एडेनिन और थायमिन यहाँ पे टोटल अमाउंट 60% हो जाएंगे, तो गुआनिन और जो साइटोसिन को मिला के 40% हो जाएंगे। तो अगर दोनों का अमाउंट इक्वल होता है तो हाफ करेंगे तो 20% यहाँ पे आ जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये यहाँ पे कह रहा है द एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय द एसए नोड स्टिमुलेट्स बोथ वेंट्रिकल्स टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ए यहाँ पे जो होगा इनकरेक्ट होगा। बी यहाँ पे कह रहा है द हार्ट साउंड लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमुलर वाल्व्स, ये भी हमारा जो गलत है। सेकंड हार्ट साउंड जो है डब साउंड जो होता है वो सेमुलर वाल्व के क्लोज होने पे वो एसोसिएटेड है। ओके, तो ए भी है यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट होगा। सी यहाँ पे कह रहा है द की वायरस कम्प्लेक्स इन ईसीजी रिप्रेजेंट्स द डीपोलाइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, आंसर विल बी ए एंड बी आर इनकरेक्ट एंड सी इज करेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पहले। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिएक्टिव शुगर। आंसर विल बी बी यहाँ पे जो है वो reducing and non-reactive sugar है। आंसर will be D, sucrose. A sugar without a hemiacetal is non-reducing because it does not behave as a reducing agent towards oxidizing metal salts. Sucrose is one example of non-reducing sugar. Different tests can work out whether sugar is reducing or non-reducing by detecting the presence of free aldehyde or ketone groups. Sucrose is less reactive and more likely to survive the journey in the phloem. यहाँ पे मैच द कॉलम है तो मैच कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी जो है वो स्प्लिन को बोलते हैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो है वो बैसोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है। मेगा कैरोसाइट्स बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स को, और टिश्यू फ्लूइड लीफ को बोलते हैं। ओके, spleen is called blood bank and graveyard of RBC. The tissue fluid present inside the lymphatic system is called lymph. Megakaryocytes are precursors of thrombocyte or platelets. The basophils secrete histamines which activate the inflammatory responses. Which of the following lipids is found in the cell membrane? Answer will be A, lecithin. Okay, repeat question ये भी है। आगे बढ़ते हैं। What will be the amount of DNA in the meiotic second products if DNA is 20 picogram in the myocyte at G2 stage? Answer will be A, 5 picogram. In G2 phase, myocyte will have chromosome number equal to 2n and a DNA content equal to 20 picogram. After undergoing meiosis 2, the cell becomes haploid and will have only 5 picogram in each cell. Which of the following is incorrect regarding the erythroblastosis fetalis condition in a pregnant woman? Okay, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। आंसर होगा सी, specific antibodies against Rh antigens are formed inside fetal blood. In an animal cell,
Cytokinesis involves, answer will be B, the contraction of contractile ring of microfilament. In animal cells, cytokinesis involves the contraction of the contractile ring of microfilament followed by cleavage and formation of daughter cells. Which of the following parts of a plant is used as commercial wood? Answer will be C. Secondary xylem. Wood is a porous and fibrous structural tissue found in the stem and roots of the tree and other woody plants. It is an organic material, a natural composite of cellulose fibers that are strong in tension and embedded in a matrix of lignin that resist compression. This is the product of cold secondary xylem. How many of the following meristems are completely secondary in origin? Answer will be B. 3 of them are जो है वो complete secondary in origin है. Okay. Intrafascicular cambium, intra इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम. ओके. Interfascicular cambium. This cambium is secondary meristem. It develops from the parenchymatous cells of medullary ridge. It is located between two consecutive vascular bundles. During secondary growth, its derivative are secondary phloem, secondary xylem, and conjunctive tissue. Intrafascicular cambium. It is primary meristem. It develops from the procambium of the stem apex. It is located inside the open vascular bundles between phloem and xylem patches. During secondary growth, the derivative are only secondary phloem and secondary xylem. Vascular cambium of a dicot stem, core cambium or of a dicot root, and vascular cambium of a dicot root are completely secondary in origin. In stem only, intrafascicular cambium is secondary in origin. Dicot stem have intrafascicular cambium which is primary meristem. Generation of second messenger is not possible in which of the given set of hormones? Answer will be B. यहाँ पे होगा एस्ट्रोजन, cortisol और thyroxine. Okay. All water soluble hormones must bind to their specific membrane bound extracellular receptors and do not enter inside the target cell. These hormones generate secondary messengers inside the target cells. All steroidal iodothyronins and corticoids are lipid soluble hormones. Succession proceeds from, answer will be D. More than one option is correct. यानी जेरिक टू मैजिक कंडीशन, हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशंस. ओके. ए और बी यहाँ पे करेक्ट होंगे. द अल्टीमेट एम ऑफ सक्सेशन इज टू bring not too dry and not too wet conditions. Magic conditions allows the flourishment of a particular type of vegetation. Dry and wet condition to a favorable condition, allowing the growth of the climax community. Thus, achieving a magic condition from both dry or wet communities are possible. Okay, ये भी क्वेश्चन जो हमारा पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है. Arrange the different parts of fruit vertically from the टॉप टू द बॉटम. आंसर यहाँ पे बी होगा. रीजन ऑफ मैचुरेशन सबसे यहाँ पे टॉप में होंगे, उसके बाद रूट हेयर, रीजन ऑफ इलोंगेशन, देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमिक एक्टिविटी और देन रूट कैप. ये भी क्वेश्चन जो हमारा पहले रिपीट कर चुका है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ a plant with palmatory compound leaves? Answer will be B. Silk cotton. Okay, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है. The compound leaves may be of two types. If in a pinnately compound leaf a number of leaflets are present on a common axis, the rachis, which represents the midrib of the midrib of the leaf as in neem. If in palmatory compound leaves the leaflets are attached at a common point, that is at the tip of the petiole as in the silk cotton. यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ फिल रीड कर लेंगे. द मैंगो हैज अ फ्लेशी इडिबल मीजोकार्प एंड स्टोनी हार्ड इंडोकार्प. Which of the following matches is not true for the hormone and their function? Answer will be D.
ऑल ऑफ द एबव आर करेक्टली मैच्ड, यानी थायरोक्सिन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नॉट ट्रू कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे ए बी सी तीनों जो है नॉट ट्रू हैं। थायरोक्सिन मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कॉर्टिसोल स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट, और मेलाटोनिन इन्फ्लुएंस पिगमेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। थायरोक्सिन यहाँ पे है रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन, ऑल्सो मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। कॉर्टिसोल हार्मोन stimulates erythropoiesis, that is the formation of erythrocyte. MSH influences pigmentation, formation of melanin, and maintains the menstrual cycle. Question number 43. Which of the following estivations involves non-uniform overlapping of petals? Answer will be A. Valvate. इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। ओके, एस्टिवेशन यहाँ पे है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द same world is known as estivation. The main types of estivation are valvate, twisted, imbricate, and vexillary. Valvate estivation petals or sepals in a whole merely meet by their edges without overlapping. Examples: sepals of hibiscus. Find the odd one out with respect to zygomorphic flowers. Answer will be A. Mustard. Zygomorphic flower is in such flower which can be divided into two equal halves from a single plane. They here mustard is showing actinomorphic symmetry, so mustard is the answer. यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स तो फिर रीड कर लेंगे, और ये भी जो क्वेश्चन है रिपीटेड है। ओके, according to Central Pollution Control Board CPCB, particulate size 2.5 micrometer or less in diameter are hazardous to human health. Okay, which of the following structures is in humans is an important neuroendocrine link to control and coordinate the activities of hormones? Answer will be C. Hypothalamus. Hypothalamus is present at the basal part of dancephalon of human forebrain. It contains several groups of neurosecretory cells called nuclei, which produces hormones. Some neurons of hypothalamus secrete hormones to control pituitary gland. Select the correct option with respect to thermal pollution. Answer will be B. Leads to the death of temperature sensitive organisms. Okay, इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ चुका है। थर्मल पोल्यूशन damages the natural environment due to which the metabolism of the organism decreases and ultimately causes death. Optimum temperature increases the metabolic rate, but a high temperature disrupts the enzymatic activity. Also decreases the oxygen content of water. It may uh, enhance the growth of plants and fish. In extremely cold areas, but only after causing damage to the indigenous flora and fauna. Read the following statements and select the appropriate option. First यहाँ पे कह रहा है the pliability and flexibility in cartilages are mainly due to the presence of chondroitin chondroitin salts in its matrix, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है the hardness of bone is due to calcium phosphate and collagen fibers with ostin protein। ओके, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड यहाँ पे कह रहा है the total number of bicephalic ribs in humans are 12 pairs। ओके, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। फोर यहाँ पे करा द sutures between skulls bones are example of cartilaginous joints, तो ये हमारा गलत है, ये सब फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। आंसर will be D, 1, 2 and 3 are correct. There are 12 pairs of ribs with two articulation surface on its dorsal end, and hence are called bicephalic. Flat skull bones are joined by dense fibrous joint to form sutures. They are also known as immovable joint. Find the odd one out with respect to ecto और endoparasitism. तो कस्कुटा, हिरोडिनिया और एनोफिली जो है वो सारे एक्टो पैरासिटिज्म है, पैरासाइटिक, और प्लाज्मोडियम जो है वो हमारा इंडो पैरासाइटिक है। आंसर यहाँ पे डी होंगे। प्लाज्मोडियम इज एन इंडो पैरासाइटिक विच लिव्स विद इन द
red blood corpuscles of man to whom it is transmitted by the bite of an infected female mosquito. Thus, the parasite has two hosts, man and Anopheles, and there is an alternation of the hosts in its life cycle. The pleiotrophic character present that quality of gene in which it can. Answer will be C. Regulate more than one phenotypic character. A gene which can regulate and express multiple phenotypic characters is called a pleiotropic gene. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute uh, towards different phenotypes. An example of this is the disease phenylketonuria which occurs in humans. Which of the following properties is not associated with muscles of humans? Answer will be C. Endodermal in origin and about 20 to 30% of body weight. तो endodermal नहीं exodermal होते हैं, ओके mesodermal सॉरी होते हैं, endodermal नहीं होगा। तो ए बी सी डी यहाँ पे करेक्ट है, सी यहाँ पे नॉट करेक्ट है। Exhibits both contractibility and extensibility, exhibits both excitability and elasticity, or can classified on the basis of location, appearance, and function. Muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. About 40 to 50% of the body weight of human adult is contributed by muscles. They have special properties like excitability, contractility, extensibility, and elasticity. Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance, and nature of regulation of their activities. The type of flowers which always produces seeds even in the absence of pollinators are called. Answer will be B. Clistogamous flowers. Repeated question ये भी है. Special cellular thickenings are observed at micropylar end of the synergids. Identify the option which correctly identifies these structures and their function. Answer will be A. Filiform apparatus help in the guidance of the pollen tube into the synergids. Answer will be A. और ये भी हमारा repeated question है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ये यहाँ पे करा फर्स्ट यहाँ पे करा अ मल्टीपोलर न्यूरॉन इज with one axon and two or more dendrites found in the cerebral cortex. Second यहाँ पे है in resting condition the sodium potassium pump transports 3Na plus inwards and 2K plus outwards the cell. थर्ड यहाँ पे है mid brain and hind brain form the brain stem including the cerebellum. The pons of the hindbrain is directly connected to the spinal cord to control respiration. ओके तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो है वो रिपीटेड है। यहाँ पे कर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स एबव आर इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट टोटल यहाँ पे 3 होंगे। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट हैं। इन रेस्टिंग कंडीशन द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 3Na plus outwards and 2K plus inwards the cell. Okay. Midbrain and hindbrain form the brain stem excluding cerebellum. The medulla of hindbrain is directly connected to a spinal cord. Okay. मेडुला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पोंस दिया हुआ, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड टू कंट्रोल रिस्पायरेशन। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट सही है, थर्ड सेकंड थर्ड और फोर्थ गलत है। ओके आगे बढ़ते हैं। In monoecious plants like castor and maize, answer will be D. G-tonogamy is not prevented. ये भी हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है। G-tonogamy is a type of self-pollination. G-tonogamous pollination is sometimes distinguished from the fertilizations that can result from it. G-tonogamy. If a plant is self-incompatible, G-tonogamy can reduce seed production. Some seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development, while in some seeds remnants of the nucellus are also persistent. Choose the option with example of respective types of seed. आंसर यहाँ पे बी होंगे, कैस्टर और ब्लैक पेपर। ओके
Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Example: wheat, maize, barley, castor. Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucleus is the पेरिस्पर्म. ओके, ये दो क्वेश्चन को मिलाकर बनाया हुआ है. ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले रिपीट कर चुका है. Vernalization is commonly seen in plants like carrot which are biennial in nature. ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है. ओके, which of the following structure of the human brain is used to connect the two hemisphere of the cerebrum? Answer will be D, corpus callosum. Dormancy of seed is broken by ethylene, whereas it is induced by. Answer will be A, abscisic acid. Repeated question ये भी है. Okay, arithmetic growth rate can be mathematically expressed as. Answer will be D, LT equal to L naught plus RT. If a female cockroach can be differentiated from the male cockroach due to presence of. Answer will be A, boat-shaped seventh sternum forming brood pouch. Answer will be A. Male cockroach bears a pair of short thread-like structure in ninth abdominal segment called anal style. In both sexes, the tenth abdominal segment bears a pair of adjointed filamentous structure called anal cerci. In females, the seventh sternum is boat-shaped and together with the eighth and ninth sterna forms a brood or genital pouch whose anterior part contains female gonopore, spermatical pores and collateral glands. Which of the following microorganism is involved in last step of biogas production? Answer will be A, Methanobacterium. Certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called methanogens, and one such common bacterium is Methanobacterium. These bacteria are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment. These bacteria are also present in the rumen, uh, a part of stomach of cattle. सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू बायोफर्टिलाइजर. तो आंसर यहाँ पे डी जो है वो बायोफर्टिलाइजर वायरस नहीं है, बाकी बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे वायरस हैं. Biofertilizer are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. The main source of biofertilizers are bacteria, fungi, and cyanobacteria. Biofertilizer add nutrients through the natural process of nitrogen fixation, solubilizing phosphorus and stimulating plant growth through the synthesis of growth promoting substances. The tissue whose cells acts like a diffusion boundary is. Answer will be C, a simple squamous epithelium. The squamous epithelium is made up of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming diffusion boundary for efficient diffusion process. Plasmids are extrachromosomal genetic material found in. Answer will be C, bacteria. The specific DNA sequence recognized by E-core are first is. Answer will be B, 5-G88T C3- repeated question. For transformation, microparticles coated with DNA to be bombarded with a gun are made up of. Answer will be D, gold or tungsten. Okay. For gene transfer into the host cell without using vector microparticles made of tungsten and gold coated with foreign DNA are bombarded into target cells at very high velocity. Which of the following is not true regarding the transgenic animals? Answer will be D. यहाँ ये भी जो है repeated question है. D यहाँ in 1997 the first transgenic cows Russi produced human protein बीटा लैक्ट एल्बुमिन इनरिच्ड मिल्क. तो ये गलत होगा हमारा. यहाँ पे अल्फा जो होते हैं अल्फा लैक्ट एल्बुमिन होते हैं. ओके, तो यहाँ पे डी गलत होगा.
बाकी ए बी और सी जो है बिल्कुल सही है। ट्रांसजेनिक माइंस आर being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on humans. They are used to study complex factors involved in growth, such as insulin like growth factor or protein alpha 1 antitrypsin is used for replacement therapy for individuals at risk for emphysema. Okay. Question number 69. Choose the mechanism that is used in the tobacco plants that are introduced with nematode specific using certain vectors. Answer will be A RNAi. ये भी हमारा repeated question है, पिछले mock test में आ चुका है. A nematode Melodyne incognitia infects tobacco plants and reduces their yield. The specific gene from the parasite are introduced into the plant using Agrobacterium as a vector. The genes are introduced in such a way that both coding RNA and complementary RNA are produced. Since these two RNAs are completely complementary, they form a double-stranded RNA. Okay, this neutralizes the specific RNA on the nematode by the process called RNA interference. As a result, that parasite cannot lie in the transgenic host and the transgenic plant protected from the pest. The interaction between cuckoo and crow is example of answer will be C brood parasitism. ये भी हमारा जो है पहले आ चुका है. Repeated question. The lac oper in the lac operon the structural gene are switched off when answer will be A repressor bind to operator. Okay. Repeated question ये भी है. A short sequence of DNA where the repressor binds preventing RNA polymerase from attaching to the promoter. This is called on-off switch of the transcription. Which one of the following also acts as a catalyst in a bacterial cell? Answer will be D 23S rRNA. ये भी हमारा जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं. ओके, हो सकता है आगे चल के वीडियो नहीं आए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं. ओके. There are two sites in the large subunit for subsequent amino acids to bind to and thus be close enough to each other for the formation of a peptide bond. The ribosome also acts as a catalyst. 23S rRNA in bacteria and 28S RNA in a eukaryotic cell is the enzyme ribosome for the formation of peptide bond. Which of the following amino acid does not show degeneracy? Answer will be D tryptophan. Okay. Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate. Leucine is coded by 6 amino acids. Proline is coded by 4 amino acids. Cysteine is coded by 2 amino acids, and tryptophan is coded by just one codon UGG, and hence tryptophan is not degenerate. How many types of gametes can be produced by diploid organisms if it is heterozygous for 3 loci? Answer will be C 8. The number of different types of gametes formed equal to 2 to power 3 2 to power n, where n is equal to number of heterozygous gene involved. The number of gametes is equal to 2 to power 3 is equal to 8. Okay. Cross between the F1 hybrid and its homozygous recessive parent is called. Answer will be A test cross. Okay, ये भी हमारा repeated question है. आगे बढ़ते हैं. If a colorblind woman marries a normal visioned man, their sons will be. Answer will be D all colorblind. Okay. What is the recombination percentage between gene Y and W in Drosophila? Answer will be A 1.3%. The recombination frequency of the test cross progeny is always lower than 50%. Therefore, if any two genes are completely linked, their recombination frequency is almost 0%. The phenomenon of linkage was studied by the scientist T.H. Morgan using the common fruit fly or Drosophila melanogaster. Select the incorrect with respect to cytoplasmic streaming. आंसर यहाँ पे जो है इनकरेक्ट यहाँ पे सी होगा. ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज substances move by cytoplasmic streaming
सप्लीमेंटेड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो ये भी हमारा जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन। बाकी ए बी और जो है हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सेल्स ऑफ द हाइड्रिला लीफ। ओके, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो आंसर यहाँ पे बी जो है इनकरेक्ट होगा। बाकी ए सी और डी जो है बिल्कुल सही है। नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और सीडोमोनास जो है वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट by the bacteria Nitrosomonas and Nitrococcus. Okay, the nitrite is further oxidized to nitrate with the help of a bacterium Nitrobacter. These steps are called nitrification. These nitrifying bacteria are chemoautotrophs. The nitrite thus formed is absorbed by plants and is transported to the leaves. In leaves, it is reduced to form ammonia that finally forms the amine group of amino acids. Nitrate present in the soil is also reduced to nitrogen by the process of denitrification. Denitrification is carried by bacteria Pseudomonas and Thiobacillus. Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? Answer will be D, polygome. Okay. बाकी जो फॉस्फेट ग्रेनुल्स, साइनोफैसिन ग्रेनुल्स और ग्लाइकोजन ग्रेनुल्स है वो सब इंक्लूजन बॉडी हैं। ओके, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। A colonial algae among the following is, आंसर विल बी सी, वॉल्वॉक्स। ओके, ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है। वॉल्वॉक्स इज अ पॉली polyphyletic genus of chlorophyte green algae in the family Volvocaceae. Okay, it forms spherical colonies of up to 50,000 cells. They live in a variety of freshwater habitat. Cyanobacteria is found in association with, answer will be C, coralloid roots of cycas. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर यहाँ सी जो है वो इनकरेक्ट होंगे। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन लैटिन। बाकी ए बी और जो डी है वहाँ पे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल द सेकंड component denotes the specific epithet. Biological names are generally in the Latin language, or the first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. Okay, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, पहले आ चुका है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, आंसर विल बी सी, ओनली यहाँ पे एटीपी जो है वो फॉर्म होते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द मेथड इन विच द phosphorylation of ADP to generate ATP occur with the help of the energy in the form of sunlight is known as photophosphorylation. The site of glycolysis, his answer will be D, cytoplasm. Repeated question. Ribulose diphosphate carboxylase enzyme catalyzes the carboxylation reaction between, answer will be B, CO2 and ribulose 1,5-diphosphate. The first step of the Calvin cycle is carboxylation, in which enzyme Rubisco enzyme catalyzes the fixation of CO2, in which initial CO2 acceptor is a 5 carbon compound ribulose 1,5-diphosphate. It forms a first stable compound which is 3 carbon PGA. The genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia, and is sterile. आंसर यहाँ पे होगा सी, Klinefelter syndrome. The genetic disorder is also caused due to presence of an additional copy of chromosome resulting to a karyotype of. This genetic disorder is caused by due to additional presence of additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47XX/Y. Such an individual has
over all masculine development. However, the feminine development of breast, that is gynecomastia, is also expressed. Such individual are sterile. The number of genes of chromosome फर्स्ट एज, आंसर यहाँ पे सी होगा 2968. ओके, क्रोमोजोम हैज क्रोमोजोम 1 हैज मोस्ट जीन 2968 एंड वाई हैज द fewest, that is 231. Study the reaction given below. CO2 plus H2O reversibly gives H2CO3 in presence of enzyme. Okay. In the absence of any enzyme, this reaction is very slow with 200 molecules of H2CO3 formed in an hour. In the presence of an enzyme, the reaction speeds dramatically with about 600,000 molecules formed very second. Name the enzyme which has accelerated at the reaction by 10 million times. आंसर यहाँ पे बी होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ओके, इतना ज़्यादा लेक्चर देने का जरूरत था नहीं, बस यहाँ पे CO2H2O एंजाइम देखना था. तो आंसर होगा बी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इस टाइप का सिमिलर तो नहीं कर सकते, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है पहले भी. ओके, द रिएक्शन catalyzed by carbonic anhydrase. In the absence of any enzyme, this reaction is very slow with about 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour. However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speeds dramatically with about 600,000 molecules being formed every second. The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. लास्ट क्वेश्चन है बायो का. द नंबर ऑफ माइटोटिक जनरेशंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इन most of the flowering plant is. Answer will be C, 3. From a single megaspore, there is formation of 8 nucleate and 7 cell takes place. To start from single cell to 8 nucleate, 7 celled, there is 3 cycles of mitosis happens. This step results in the formation of the female gametophyte. ओके, तो ये सारे थे बायो क्वेश्चंस. अब आते हैं केमिस्ट्री में. ओके, हो सकता है आगे चल के वीडियो नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, तो वीडियो आ भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसलिए आप पिछले जो वीडियो है उनको ही बार बार रिवाइज करते रहें, उसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे. ओके, क्योंकि आज जो आगे जो क्वेश्चन है वो सारे पिछले क्वेश्चन का ही रिपीट आ रहा है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके. ओके, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज. आंसर विल बी बी, 7.30 × 10⁻³ The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfite ion in acidic solution is. Answer will be A, 2/5. Which of the following statements are correct about hexagonal close packing? आंसर यहाँ पे फर्स्ट होंगे, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ का रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8. सेकेंड, इट इज ए बी टाइप पैकेजिंग इन विच थर्ड लेयर इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर. थर्ड यहाँ पे है बेरिलियम मैग्नीशियम मोलिब्डेनम ETC आर फाउंड टू हैव HCP स्ट्रक्चर. 4 यहाँ पे है इन HCP एटम्स ऑक्युपाई 70% ऑफ द अवेलेबल स्पेस. आंसर यहाँ पे सी होंगे 2, 3, 4, यानी कि 2, 3, 4 यहाँ पे जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग के लिए है. ओके, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, नॉट 8, हेंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. रेस्ट आर करेक्ट हियर. Which of the following changes represents a disproportionation reaction? आंसर यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दी जितने भी हैं यहाँ वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है. द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम इज. आंसर विल बी बी, CH3O CH3. विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन कैन नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट. आंसर यहाँ पे होगा C, CH3, C प्लस CH3, CH3 और CH3. For two gases A and B with molecular weights Ma and Mb, it is observed that at a certain temperature,
T, the mean velocity of A is equal to the root mean square velocity of B. Thus, the mean velocity of A can be made equal to the mean velocity of B if answer will be B. A is lower to a temperature T2 is less than T while B is at T. Okay. Question number 8, formaldehyde reacts with excess of ammonia to give आंसर यहाँ पे डी होगा हेक्सा hexamethyline tetraamine. When CO2 is passed through brine solution saturated with ammonia, white crystals precipitate out. These crystals are of answer will be D, NHCO3. Which arrangement of electrons leads to ferromagnetism? Answer will be A. Which oxide of carbon is formed when malonic acid is warmed with P2O5? Answer will be B, C3O2. Saccharin is imide of. आंसर विल बी ए. यहाँ पे जो है वो इमाइड ऑफ दिस कंपाउंड है. ASF5 reacts with HCF4 to form a adduct. The shapes of cation and anion in the adduct are respectively. Answer will be B, T-shaped and octahedral. For the gaseous reaction C2H4 plus H2 gives C2H6, the equilibrium constant has the unit. Answer will be B, dm cube per mole. Kb for weak base B is 1.0 to the power minus 6. Then hydrolysis constant for the reaction B plus plus H2O reversibly gives BOH plus H plus H. Answer will be C, 10 to power minus 8. Dehydration of alcohol into alkene by concentration H2SO4 involves which among the following reaction intermediate? Answer will be B, carbocation. What is the name of complex AlOH whole twice H2O whole 4 SO4? Answer will be C, tetra aqua dihydroxoaluminum third sulfate. Which of the following is an incorrect statement? आंसर will be यहाँ पे C होगा. Halogen show only minus I oxidation minus 1 oxidation state. बाकी A, B और जो D है यहाँ पे correct है. Fluorine is highly reactive. HF molecules form intramolecular H bonds or halogens are a strong oxidizing agent. Standard molar enthalpy of formation of CO2 is equal to, answer will be D, the standard molar enthalpy of combustion of carbon graphite. The equivalent conductivity of 0.1 m weak acid is 100 times less than that at infinite dilution. The degree of dissociation of weak electrolytes at 0.1 m is, answer will be C, 0.01. H2O has a positive value of a net dipole moment while BeF2 has zero dipole moment because answer will be D, BeF2 molecule in is linear and H2O is bent. 0.50 gram sample of impure calcium carbonate is dissolved in 50 ml of 0.0985 NaHCl. After the reaction is complete, the excess HCl required 6 ml of 0.105 NaOH for neutralization. The percentage purity of calcium carbonate in the sample is, answer will be A, 42.95%. In which of the following redox reaction precipitate is not formed? Answer will be A, Cr3 plus aqueous plus Na2O2 solution. The boiling point of glucose solution containing 12 gram of glucose in 100 gram of water is 100.34 degrees Celsius. Okay, boiling point of water is 100 degrees Celsius. The molar elevation constant of water is, answer will be A, 0.51 degrees Celsius per molar. Which carbonyl compound will not give addition reaction with water? Answer will be C, CH3 C double bond O CH3.
Phenol reacts with a benzene diazonium cation at pH 7.5 to give. Answer will be D, azo di. The delta H uh, heat of formation, enthalpy of formation, यहाँ पे स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, standard enthalpy heat of formation for CO2, CO and H2O equal to minus 393, minus 110.5 and minus 241.8 kilojoule per mole respectively. The standard enthalpy change in kilojoule for the reaction CO2 gas plus H2 gas gives CO gas plus H2O gas is. Answer will be B, 41.2. The percentage of Mg2 plus ions in a solution can be tested by adding a solution of, answer will be Na2HPO4. If the half cell reaction A plus electron gives A minus, if has a large negative reduction potential, it follows that answer will be D, A minus is radially oxidized. The hydrogen ion concentration is 0.2 m ethanoic acid. Ka equal to 2 into 10 to the power minus 5 mole per dm cube. Is answer will be C, 2 into 10 to the power minus 3. In the given reaction, okay, BrCH2 CH2 whole thrice CH2OH in presence of NaOH toluene 140 डिग्री सेल्सियस. x यहाँ क्या होगा, आंसर यहाँ पे होगा C, D. ओके. The EA of reaction in the presence of catalyst is 5.25 kJ per mole and in the absence of catalyst is 8.314 kJ per mole. What is the slope of the plot of ink, sorry, a plot of ln K Vs 1 by T in the absence of catalyst? R equal to 8.314 joule per Kelvin per mole. Answer will be C, minus 1000. Peptidation is a process of, peptidation is a process of, answer will be C, dispersing the precipitate into colloidal state. Which of the following sets of quantum numbers represent an impossible arrangement? आंसर यहाँ पे होगा C, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू -2 नहीं होगा. ओके, क्योंकि l जो है वो m से ज़्यादा नहीं हो सकता, m जो है वो l से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और s यहाँ पे 1/2 बिल्कुल यहाँ पे गलत है. What is the end product in the following sequence of reaction? Benzoic acid in presence of PCl5 gives P, P in presence of 2NH3 gives Q, and Q on reduction gives R. Answer यहाँ पे होगा B, benzyl amine. Number of pi bonds and sigma bonds in the following structure is. Answer यहाँ पे होगा D, 5 and 20 respectively. In the complex CONH3 whole 6 CdClX, the oxidation number of cobalt is +3. The value of X is, answer will be D, 5. End product S of the reaction sequence is, okay, CH3 CH2 Br in presence of KCN gives P, P in presence of H2O and H plus gives Q, and Q in presence of SOCl2 gives R, and R in presence of C2H5 whole twice CD gives S. आंसर यहाँ पे होगा C, CH3 CH2 CO C2H5. How many liters of water must be added to 1 liter of an aqueous solution of HNO3 with a pH of 1 to create an aqueous solution with pH equal to 2? Answer will be C, 9. Match the column 1 with column 2 and mark the appropriate choice. Okay. सुक्रोलोज यहाँ पे जो होगा वो थर्ड होगा, यानी पी का सेकंड, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं सुक्रोलोज. क्लोरोजैनोलोन का होगा 4, यानी एंटीसेप्टिक होते हैं. आर प्रोंटोसिल का होगा थर्ड, यानी एंटी बैक्टीरियल एजेंट होते हैं. और एस का फर्स्ट, यानी टर्फेनाडीन का होगा फर्स्ट, यानी एंटी हिस्टामाइन.
Which one of the following is not correct for monosaccharides? First, they are optically active hydroxy पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट हो रखा है, तो यहाँ पे ये तो है बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकंड यहाँ पे कह रहा है फ्रक्टोज इज कीटोज सुगर एंड हेंस इट डज नॉट गिव रेड प्रिसिपिटेट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो ये जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल जो है गलत होगा, नॉट करेक्ट होगा। थर्ड यहाँ पे कह रहा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज आर एनोमर्स, ये हमारा बिल्कुल सही है। फोर यहाँ पे कह रहा है ग्लूकोज एंड मैनोज आर एनोमर्स, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोक्साइड? आंसर यहाँ पे डी ऑल आर करेक्ट, यानी ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। इट रिड्यूसेस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ PdCl2 टू मेटालिक PD। CO इज न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एक्ट्स एज अ fuel. In laboratory, it is prepared by dehydrating HCOOH with conc H2SO4. Compound X of molecular formula C4H8 takes up one equivalent of hydrogen in presence of Pt to form another compound Y. X on ozonolysis gives acetaldehyde as the only product. Compound X is, answer will be B, CH3 CH double bond CH single bond CH3. Arrange reactivity of given compounds in decreasing order of electrophilic substitution reaction। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे सेकंड होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो सेकंड सबसे ज़्यादा होगा यानी पायरोल, देन फर्स्ट यानी फ्यूरान, और लास्ट में होगा थ्री यानी थायोफिन। Which of the following electropositive metal is used for the isolation of boron from B2O3? आंसर will be C, मैग्नीशियम। ओके, तो ये सारे थे केमिस्ट्री क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा तो प्लीज लाइक कर देना। अब आते हैं यहाँ पे, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट यहाँ पे है व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड एनर्जी लेवल टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल, देन आंसर विल बी ए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, आंसर विल बी बी 2πr। A body of mass capital M moving with velocity v meter per second suddenly breaks into two pieces. One part having mass capital M by 4 remains stationary. The velocity of the other part will be, answer will be D 4v by 3. A 3 kg ball strikes a heavy rigid wall with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the wall. It gets reflected with the same speed at 60 degree with the wall. If the ball is in contact with the wall for 0.2 seconds, the average force exerted on the ball by the wall is, answer will be C 150 root 3 Newton. Repeated question. A particle moves in a circle of the radius 0.5 meter at a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of particle if its speed changes from 2 meter per second to 4 meter per second in 4 seconds. Answer will be A 1 radian per second square. If the vertical component of Earth's magnetic field at a place is under root 3 times the horizontal component, then the value of dip at that particle is, answer will be A 60 degree. Question number 7. What is the equivalent resistance between A and B in the given circuit? Answer will be B 8 by 3 ohm. A meter bridge wire AB shown in the adjoining figure is 100 cm long with AD equal to 30 cm. No deflection occurs in the galvanometer. The value of R is, answer will be C 14 ohm. Repeated question A B है. An oscillator circuit contains an inductor 0.05 Henry and a capacitor of capacity 80 microfarad. When the maximum voltage across the capacitor is 200 volt, the maximum current in amperes in the circuit is, answer will be D8, sorry B8. A square loop
carrying a steady current I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1 at a distance d from the conductor as shown in the figure. The loop will experience, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर हमारा डी होगा, द नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द कंडक्टर. A conductor with a cavity is charged positively and its surface charge density is sigma. If E and V represent the electric field and potential, then inside the cavity, answer will be D. E equal to 0 and V is equal to constant. The effective capacitance between A and B of an infinite chain of capacitors joined as shown in the figure. Okay, तो यहाँ पे आंसर होगा बी √5 - 1/2 माइक्रो फैराड. A man of weight W on the surface of the earth, what is his weight at height equal to capital R? Answer will be C, W by R. Question number 14. The time period of a satellite of earth is 5 hours. If the separation between the earth and the satellite is increased to 4 times the previous value, the new time period will become, answer will be A, 40 hours. Two rods of the same length and diameter having thermal conductivities K1 and K2 are joined in parallel. The equivalent thermal conductivity of the combination is, answer will be C, K1 plus K2 by 2. Among the following, the correct statement is, answer will be A, internal energy of gas depends only on the state of the gas. An ideal monoatomic gas is taken around the cycle ABCDA as shown in the PV diagram. The work done during the cycle is given by, answer will be B, PV. Which of the following particle will describe the smallest circle when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field? Answer will be D, electron. The length of a magnet is large compared to its width and breadth. The time period of its oscillation in a vibration magnetometer is 2 seconds. The magnet is cut along its length into 3 equal as parts then placed on each other with their like poles together. The time period of this combination will be, answer will be B, 2 by 3 seconds. Which of the following options is correct for the object having a straight line motion represented by the following graph? आंसर यहाँ पे होगा C, average velocity is 0. The equation of motion of a projectile is y equal to 12x minus 3 by 4x square. The horizontal component of velocity is 3 meter per second. The range of the projectile is, answer will be B, 16 meter. A block of mass 2 kg slides on an inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is under root 3 by 2. What force along the plane should be applied to the block so that it moves down? Answer will be A, 11.21. A bullet of mass 0.1 kg is fired with a speed of 100 meter per second. The mass of gun is 50 kg. The velocity of recoil is, answer will be A, 0.2 meter per second. A sample of the radioactive element has a mass of 10 gram at an instant t equal to 0. The approximate mass of this element in the sample after 2 min lives is, answer will be A, 1.35 gram. What is the probability of a radioactive nucleus to survive 1 min life? Answer will be A, 1 by E. Spring of force constant K is cut into two pieces such that one piece is double the length of the other. Then the long piece will have a force constant of, answer will be B, 3K by 2. The average acceleration of a particle performing SHM over one complete oscillation is, answer will be C, 0.
Light of wavelength 500 nanometer is incident on a metal with work function 2.28 electron volt. The de Broglie wavelength of the emitted electron is, answer will be B, more than equal to 2.8 into 10 per minus 9 meter. When a piece of metal is illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda, then stopping potential is 3 Vs. When the same surface is illuminated by the light of wavelength 2 lambda, then stopping potential becomes Vs. The value of threshold wavelength for photoelectric emission will be, answer will be A, 4 lambda. Two wires having the same length and material are stretched by the same force. Their diameters are in the ratio 1 is to 3. The ratio of strain energy per unit volume of these two wires is smaller to larger diameter then stretched when stretched is, answer will be D, 81 is to 1. Two water pipes of diameter 2 centimeter and 4 centimeter are connected with the main supply line. The velocity of flow of water in the pipe of 2 centimeter diameter is, answer will be A, 4 times that in the other pipe. A plane mirror of circular shape with radius r equal to 20 centimeter is fixed to the ceiling. A bulb is to be placed on the axis of the mirror. A circular area of the radius r equal to 1 meter on the floor is to be illuminated after reflection of light from the mirror. The height of the room is 3 meter. What is the maximum distance from the center of the mirror and the bulb so that the required area is illuminated? Answer will be A, 75 centimeter. A double convex thin lens made of the refractive index 1.6 and has radii of curvature 15 centimeter each. The focal length of the lens when immersed in a fluid of refractive index 1.63 is, answer will be D, minus 407.5 centimeter. A thin circular ring of mass capital M and radius r is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects, each of mass small m, are attached gently to the opposite ends of the diameter of the ring. The wheel now rotates with the angular velocity. Answer will be C, omega m by capital M plus 2m. A solid cylinder of mass capital M and radius r rolls from rest down a plane inclined at angle theta to the horizontal. The velocity of the center of mass of the cylinder after it has rolled down a distance d each. Answer will be D, 4 by 3 g d sine theta under root. A PN junction diode, the current is the reverse biased state is due to, answer will be A, flow of minority charge carrier from P side to N side. The combination of gates shown in the figure below produces, answer will be B, OR gate. By what percentage should the pressure of a given mass of a gas be increased so as to decrease its volume by 10% at a constant temperature? Answer will be D, 11.1%. The percentage errors in quantities P, Q, R and S are 0.5%, 1%, 3% and 1.5% respectively in the measurement of physical quantity A equal to P cube Q square by under root RS. The maximum percentage error in the value of A will be, answer will be A, 6.5%. During a scattering of light, the amount of a scattering is inversely proportional to fourth power of the wavelength of light. Answer will be B. Young double slit experiment is carried out by using green, red and blue light, one color at a time. The fringe width recorded are BG, BR and BB. Okay, बीटा B. Okay, आंसर यहाँ पे D होगा. बीटा R सबसे ज़्यादा, देन बीटा ग्रीन, उसके बाद बीटा यहाँ पे ब्लू होंगे. ओके, a source
emits a sound of frequency of 400 hertz, but the listener hears it 390 hertz, then answer will be C. The listener is moving away from the source. The fundamental frequency of an air column in a pipe closed at one end is 100 Hz. If the same pipe is open at both the ends, the frequencies produced in Hz are. Answer will be D. 200, 400, 600 and 800. A particle moves along the x-axis from x equal to 0 to x equal to 5 meter under the influence of a force given by F equal to 7 minus 2x plus 3x square. The work done in the process is. Answer will be D. 135 joule. लास्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स का है. स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर. द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इज. आंसर विल बी 8 जूल. ओके, ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो क्वेश्चंस. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो नए व्यूवर्स हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को. ओके, और एनडीए अभ्यास मॉक टेस्ट का सारे पीडीएफ अवेलेबल है. उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अभी ऑफर भी चल रहा है, जो है 50 रुपीज़ में आपको सारे अप टू 70 पीडीएफ बने हुए हैं आपको मिल जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.